Okay, students, good evening to one and all present here. So, I welcome you to today's session of Chemical Kinetics, second class. So, this is Dr. Dharan in front of you, going live with, and let's start with the today's discussion of chemical kinetics. Clear? So, and all students are requested to please take your notebooks, pen, copies, everything. Please keep it along with you and write down the points as soon as the class goes. आप लोग को इस क्लास का नोट्स आप लोग को टेलीग्राम पे या फिर हमारे ऐप में मिल जाएगा वंस यू गेट द थिंग्स एंड इट ऑल विल गो परफेक्टली वेल क्लियर. सो लेट अस स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग मच टाइम गाइस. सो एज सुन एज लाइक इन द लास्ट क्लास हमने डिस्कस किया था केमिकल काइनेटिक्स के बेसिक्स पे. करेक्ट, वी अनबॉक्स द चैप्टर. हमने केमिकल पूरा चैप्टर का एक ओवरव्यू लिया था. करेक्ट, हमने एक ओवरव्यू पे हमने डिस्कस किया था कि हाउ द थिंग्स आर गोइंग ऑन एंड यू नो लाइक what is the chapter exactly about and chemical reaction, rate of reaction, right, and all that aspects. Rate क्या होती है, instantaneous rate, average rate, correct. Then also we discussed like दो टाइप के rates होते हैं, right. Classification of reactions हमने देखा, फास्ट रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस, मॉडरेट, उनके एग्जांपल्स देखे. करेक्ट. फिर उसके बाद व्हेनेवर वी आल्सो डिस्कस फ्यू बेसिक पॉइंट्स. बेसिक पॉइंट्स जैसे हमने डिस्कस किया था ए, अगर मेरे पास मान लो ए गिविंग रेस मी टू बी. करेक्ट, अगर मेरे पास ए अगर बी में कन्वर्ट होता है एंड एक रिएजेंट एक कैटलिस्ट है. करेक्ट, विच इज एन एक्स इज ए सब्सटेंस. ओके, इट इज ए कैटलिस्ट मानते हैं इसको. तो अगेन वी डिस्कस कैटलिस्ट आर ऑफ टू टाइप्स, पॉजिटिव नेगेटिव कैटलिस्ट होते हैं. करेक्ट, जो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है और रिएक्शन को फास्टरली एंड कम टाइम में कंप्लीट करता है वो पॉजिटिव कैटलिस्ट होता है ना. वी डिस्कस्ड ऑल दीज. देन दूसरी हमने डिस्कस किया था रेट इक्वेशन के ऊपर. लेट अस क्विकली रिवाइज द फॉर्मूला रेट. तो वी डिस्क्राइब व्हाट इज रेट एक्चुअली. रेट मतलब इट इज एक्चुअली चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन divided by time. Correct guys, with the sign of plus minus. So everyone knows, हमने जैसे previous class में discuss किया था, what does the sign plus, this positive sign क्या indicate करता है? It indicates the products. मतलब आप खुद समझो, ठीक है. as soon as the time goes, ठीक है, as soon as the reaction moves forward. For example, let us consider a reaction of ammonia formation. ठीक है, N2 plus 3H2 फॉर्मिंग अमोनिया, 2 moles of NH3, दैट इज नथिंग बट अमोनिया गाइस. ठीक है, ये मान लेते हैं एक फॉरवर्ड रिएक्शन है एंड लेट अस आल्सो कंसिडर दैट इट इज एज एन इररिवर्सिबल रिएक्शन. व्हाट इट इज एन इररिवर्सिबल कंप्लीट रिएक्शन. ठीक है, सो लेट अस कंसिडर एट t इज इक्वल्स टू 0 मिनट्स पे. ठीक है, 0 मिनट्स पे आई एम हैविंग फुल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स. Let us consider the product concentration as 100 or 10 moles. ठीक है, मैं N2 और H2 दोनों को मिला के ले रहा हूँ. I am having 10 moles of this substance and heat is 0. And at T is equal to, let us consider as 5 minutes. After 5 minutes ये मेरे 10 moles हो जाते हैं something 6 moles and products मेरे फॉर्म हो रहे हैं approximately 4 moles. Correct? So this is 4 moles, मतलब मेरे products थोड़े बन रहे हैं. तो at t is equal to, let us consider at 10 minutes. After 10 minutes this is 5 moles and this is 5 moles. तो आप हमने बताया, ठीक है, इनिशियली 10 moles था. at t is equals to 10 minutes मतलब 10th मिनट पे. ठीक है, t is equals to 10th मिनट पे या फिर 10 मिनट के बाद इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स का कॉन्सेंट्रेशन हाफ रिड्यूस हो गया है या फिर इनिशियल प्रोडक्ट्स का कॉन्सेंट्रेशन जब एटलीस्ट हाफ 50% तक बन जाए. सो दिस इज व्हाट कॉल्ड योर टी हाफ. व्हाट इज कॉल्ड टी हाफ गाइस? इट इज द टाइम टेकन बाय द रिएक्टेंट्स. लेट अस राइट डाउन दिस एंड रिवाइज दिस कॉन्सेप्ट एज ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द फर्दर प्रोसीडिंग ऑफ द चैप्टर. ठीक है, टाइम टेकन by reactant to reduce to its 50% of initial concentration. 50% ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन में रिड्यूस होने के लिए जो टाइम लेता है दैट इज व्हाट यू कॉल टी हाफ. Clear? That is what called your T half.
Meanwhile, all the viewers, all the students are requested, if you have any kind of questions, any kind of queries, आपके लिए live chat open है, तो please you can write down your queries and आपके doubts वगैरह आप live chat में पूछ सकते हो. Clear? So next, this was we discussed about t half. Again we also discussed some graphs, correct? So let us try to understand the graph as well and revise that as well, guys. तो सबसे पहले मैंने x axis पे मैंने ले लिया है time and y axis पे I am taking concentration, ठीक है, and the reactant B, R is the reactant which is converted to P as a product in some time. So let us mark the concentration according to it. So initially at time 0, initially मेरे पास reactant के concentration थे 10 moles. After as soon as the time goes, reactant की concentration decrease हो जाती है मेरी, और product का concentration था 0, जो after some time I am getting at this is what the product concentration it is. Clear? So if you see, observe the distance, ठीक है, ये वाला distance और ये वाला distance यानी exactly same, यानी reactants और products का concentration इस जगह पे same है, and this is, let us ये time be 10 minutes, ठीक है, 10th minute है, तो this is what your t half. t half को अगर हमें ग्राफिकली शो करनी होती है तो दिस इज व्हाट योर t half it is. क्लियर? नेक्स्ट, एज व्हाट द इन्फो फ्रॉम दिस ग्राफ, ठीक है, ग्राफ में आप क्लियरली देख सकते हो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जा रही है. क्लियर? सो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन भी कह सकते हो, बट दिस इज सोली एप्लीकेबल फॉर रिवर्सिबल रिएक्शंस. इरिवर्सिबल रिएक्शंस में ये एप्लीकेबल नहीं होती है. क्लियर? वी डिस्कस्ड ऑल दिस एंड लाइक अगर हम लोग रिएक्शंस के क्लासिफिकेशन की बात करें तो वी हैड 3 टाइप्स. वन इज वेरी फास्ट, मॉडरेट रिएक्शन था हमारे पास, फिर स्लो रिएक्शंस थे. स्लो रिएक्शंस का बेस्ट एग्जांपल हमने क्या दिया था, वी गेव रस्टिंग ऑफ आयरन. क्लियर? रस्टिंग ऑफ आयरन वाज द एग्जांपल दैट वी गेव. वेरी फास्ट रिएक्शन वी गेव फॉर्मेशन ऑफ वाइट प्रेसिपिटेट. बेरियम सल्फेट की वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रही थी, अमोनियम सल्फ नाइट्रेट की वाइट प्रेसिपिटेशन फॉर्म हो रही थी. वो सारे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस आर वेरी फास्ट. ऑल, यू कैन आल्सो राइट ऑल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस. क्लियर? मॉडरेट रिएक्शंस में हाइड्रोजन पेरोक्साइड का स्प्लिटिंग, हाइड्रोजन पेरोक्साइड splits into what, guys? H2O plus an O2 molecule, correct? This reaction is a moderate reaction. Again we have esterification. Esterification reactions. What are esters? As we discussed, they are nothing but anaromatic compounds. Clear? So we finished discussing all these concepts of basic, and now we'll talk a new concept called rate law. Clear, guys? Rate law के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, what is actually the rate law? ठीक है, what do you understand by rate law? सिंपल है, रेट लॉ मतलब इट इज नथिंग बट इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ ए रिएक्शन. जैसे हमने रेट ऑफ रिएक्शन, व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन वी डिस्कस. रेट ऑफ रिएक्शन मतलब हमने कहा था कि चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम इज रेट ऑफ रिएक्शन. सो वी आर रिप्रेजेंटिंग दैट रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स. ठीक है, सिर्फ रिएक्टेंट्स के टर्म्स में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग रेट लॉ. सो अगेन, व्हाट इज रेट लॉ? इफ समवन आस्क्स यू की डिफाइन रेट लॉ, रेट लॉ के बारे में आप लोग क्या जानते हो, तो यू शुड बी टेलिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज कॉल्ड रेट लॉ. क्लियर, गाइज? एंड दूसरी बात, ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंटली यहाँ पे एक चीज नोट करनी है, that is it can only be established. What? It can only be established by experiments. इसकी actual value सिर्फ experimental होती है, मतलब आप theoretically आप कुछ नहीं बोल सकते, experimental value होती है rate law. Clear? And generally rate law expressions are not simple and these may differ for the same reaction and conditions under which the reaction is being carried out. For example, अगर rate law की expression या rate की बात करूं, ठीक है, for example let us consider a reaction that is occurring at some x degree centigrades. Clear? Let us consider, for example, A is giving me B at a particular temperature of x Kelvin. ठीक है, x Kelvin. Now let us take in centigrade instead of it. ठीक है, centigrade. And the time taken here is 5 minutes. But if the same reaction completes
now I'm just changing the temperature and I'm just increasing to it y degrees, and time taken now it is 3 minutes. Okay, so as we all know, rate of an equation, ठीक है, rate of a reaction or a chemical equation generally depends on what of the following factors? C, T and C. We discussed C, T and C. These are the four major factors, correct? What is that? First, concentration of reactants and products. दूसरा, temperature. तीसरा, nature of reactants and products, and last was your catalyst. ठीक है, and if these are the these are the four major factors that usually are affecting your temperature, your reactions. So आप rate of equation जब rate लिखते हो तो that is delta AB upon delta T. This is what you write, right? तो ये जब in terms of concentration of reactants के लिखते हो तो इसे usually affected by different values. मतलब ये R की जो वैल्यू है X टेम्परेचर पे एक वैल्यू होगी, Y टेम्परेचर पे एक वैल्यू होगी, मतलब रिएक्शन सेम है, ठीक है, टाइम टेकिंग इज डिफरेंट एंड ऑल दैट फैक्टर्स आर अफेक्टिंग. So generally large number of reactions start with pure reactants, we can obtain simple rate law. अगर simple rate equation चाहिए तो usually that does take. तो main चीज इसमें ये आपको याद रखनी है, what is rate law. If someone asks you to define rate law, it means it is the representation of rate of a reaction. किसी भी reaction का rate. अगर आप concentration terms of reactant के concentration, what reactant के concentration, not in the terms of product, I am talking about reactants, ठीक है. रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन में अगर आप लिखते हो रेट लॉ को, सो दैट इज व्हाट यू आर कॉल्ड एज डिफाइंड एज रेट लॉ, एंड इट्स टोटली एक्सपेरिमेंटल. क्लियर, इट इज टोटली व्हाट एक्सपेरिमेंटल. सो सिंपली व्हाट इज द रेट एक्सप्रेशन, ठीक है. अगर हम लोग एक रेट एक्सप्रेशन बनाना चाहते हैं तो इट इज रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर ऑर्डर. क्लियर, टू द पावर ऑर्डर. आप सोच रहे होगे, ऑल यू गाइज माइट बी थिंकिंग व्हाट इज दिस ऑर्डर, ठीक है, what is this order, different term, new term has been come here. All the repeaters who are, if someone is a repeater watching here, if someone is a long term, if someone is a repeater student watching here, guys, I'll tell you just a piece of motivation. See, अगर आप लोग repeater batch में हो तो it is not your last chance, okay, it was just you just missed by some things, that's it. Don't worry, this time, this year, yeah, please be stick on to APJ and definitely you're gonna be getting into your dream medical college. Clear? So, and you guys might be knowing what is order and what is molecularity, but for the newcomers, let me tell you, order and molecularity are two different concepts. We have first order, second order, third order, zero order, nth order reaction. So we have different order reactions. We'll discuss about this in the coming sections, but for now, differential rate equation. So जैसे हमने explain किया था rate law, ठीक है, विल जस्ट गिव इट अ न्यूमेरिकल टर्म और ए केमिकल इक्वेशन टाइप, मतलब एक फॉर्मूला टाइप उसको दे देते हैं, ठीक है. सो एज वी आर स्टार्टिंग विथ रेट लॉ, ठीक है, वी ऑल नो रेट लॉ इज रिप्रेजेंटेड बाय आर, करेक्ट. सो अकॉर्डिंग टू आई मीन लाइक रेट ऑफ अ रिएक्शन, लेट अस कंसिडर a reaction. I'll take an example for you guys and let us go with that. So the reaction is here N2 plus 3H2 giving me 2 moles of NH3, that is ammonia. Clear? And rate of this reaction, let R be rate of this reaction. So according to rate law, so now let us write according to rate law, R is directly proportional to concentration of reactants to the power order. We'll explain what is order in coming terms, in coming sections I mean. So now for now just focus on this guys, ठीक है. So just to be clear, I'll just write this as concentration or C, ठीक है. R is directly proportional to C power order. Just to remove the proportionality sign, I'll give a constant K C power order, ठीक है. And what is this K? This is your rate constant. It is called rate constant. It is basically a proportionality constant. Proportionality constant. Clear?
So what, this is a general equation for rate law, guys. Again, in rate law, what, again, let us clearly describe, just give it a quick recap. This is a reaction I have got N2 plus 3H2 forming me 2 moles of what, 2 moles of ammonia. ठीक है, इस रिएक्शन का रेट है R. Let R be the rate for this reaction. ठीक है, see there are two things. First, rate of a reaction is different, rate equation is different, rate law is different. Clear? So what are the three terms you must understand? पहला टर्म ये कि एक तो है आपका रेट लॉ. ठीक है, रेट लॉ. अगेन आई एम हैविंग a term called rate equation. Correct? Rate equation. Again I have a equation, let us, the term called rate law, rate equation. Then we discussed rate of equation, this equation in stoichiometric terms. ठीक है. So what is rate law? As I discussed just now, अभी हमने एक फॉर्मूला बनाया, R is equals to K into C power order. This is रेट इक्वेशन इन स्टोइकोमेट्रिक टर्म्स. मतलब जैसे हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था. क्लियर? इफ यू हैव वॉच्ड द प्रीवियस वीडियो, लास्ट वीडियो ऑफ द सेम चैप्टर, यू कैन जस्ट विजिट दोज चैप्टर्स बाय मीन इन द गोइंग टू द प्लेलिस्ट सेक्शन. आप चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हो. केमिस्ट्री प्लेलिस्ट में आपके पास केमिकल काइनेटिक्स की पूरी सीरीज है. एंड यू कैन इवन गो टू द लाइव स्ट्रीम ऑफ लास्ट लाइव स्ट्रीम दैट हैपेंड जस्ट 1 day बैक. ठीक है, तो 1 or 2 days बैक एक लाइव स्ट्रीम हुई थी, तो उसमें भी देख सकते हो. ठीक है, वो आपको समझ में आ जाएगा. सो कमिंग बैक टू टॉपिक, रेट इक्वेशन इन स्टोइकोमेट्रिक टर्म्स. तो फॉर एग्जांपल लेट अस कंसीडर, इंस्टेड ऑफ राइटिंग, लेट अस टेक द सेम एग्जांपल. ठीक है, N2 plus 3H2 गिविंग मी 2 moles of NH3. सो रेट इक्वेशन अगर मेरे को इस चीज का लिखना होता है तो आई विल राइट माइनस डेल्टा N2 अपॉन डेल्टा T, that is equals to minus 1 by 3 delta H2 upon delta T, that is equals to plus 1 by 2 delta NH3 upon delta T. This is the rate equation in stoichiometric terms. Okay, for a stoichiometric equation में अगर मुझे लिखना है तो वो होगा ये. ठीक है, rate of equation मतलब सेम N2 plus 3H2 is equals to 2NH3. इस पूरे रिएक्शन का रेट है R. एंड अगर मुझे सिर्फ रेट ऑफ इक्वेशन विथ रेस्पेक्ट टू N2, नाउ आई एम राइटिंग विथ रेस्पेक्ट टू N2 लिखना होगा, तो मेरे को माइनस डेल्टा N2 अपॉन डेल्टा T लिखना होगा. सिमिलरली रेट विथ रेस्पेक्ट टू अमोनिया लिखना होगा, तो आई विल राइट प्लस डेल्टा NH3 upon delta T. I hope everything is clear. All the three terms are crystal clear to everyone. Just a quick recap. एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं. There are three terms here. Okay. The first term is rate law. Second is rate equation for a stoichiometric chemical reaction. ठीक है. दूसरा है rate of equation. Rate of equation को हम लोग कैपिटल R से मेजर करते हैं. ठीक है. This rate of equation it is called R. And this R is individually represented with each of the reactants अगर चाहिए तो rate of this entire equation with respect to N2. ठीक है, ये तो पूरा रिएक्शन का रेट. R is the rate of this entire equation. ठीक है, and again what is rate guys? You know that is change in concentration by change in time. Okay, change in concentration of this entire reaction per unit time is rate of that particular equation. Clear? That is with that particular equation. लेकिन if we talk about only N2, if we talk about only N2 and NH3 with respect to N2 and NH3, we write this minus sign. And remember rate of इस वाले second third वाले में और second वाले में अगर आप ध्यान दें तो second वाले में I have mentioned 1 by 3, 1 by 2. The second one I have written minus 1 by 3, okay, plus 1 by 2 and all. But in the third I didn't write because I am writing only with respect to 1 mole of this ammonia. Okay, I am not comparing here with the entire other things. That is what a major difference you must be seeing here. Clear? So let us come back and again see now if you want the units of K. Okay, अगर मुझे unit of K चाहिए. So again as I've said this, what is K? It is the rate constant. It is the specific reaction rate. ठीक है, rate constant को what else we can also call that. We can also call that as specific reaction rate. ठीक है, we can also call it as specific reaction rate, also known as rate of that reaction when concentration is unity. For example, just consider this. Let us have this example. So as I said,
R is equals to K into C power order. Let us consider, okay, C is equals to 1. Just let us consider. Okay, let's just consider, and C is equals to 1. So 1 to the power order. The entire is a constant, I mean like the thing. So just we get R is equals to K. ठीक है, अगर let it be a first order reaction. Let the order be first order reaction. 1 power 1 is obviously 1. There is nothing. So R becomes equals to K. So that means rate of that equation becomes to rate constant. So we can, at that particular case, K is also called as specific rate constant. ठीक है. So what happens here, देखो, अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हम लोग लेते हैं, फॉर लेट अस कंसीडर द ऑर्डर बी 1 एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी यूनिटी, सो दैट पर्टिकुलर टाइम, उस पर्टिकुलर टाइम पे हम उसको स्पेसिफिक रिएक्शन रेट भी बोलते हैं. ठीक है. And main cheese guys, what factors on K depend? Value of K is a constant for a given reaction depending only on temperature and catalyst use. As I said, C, T and C, concentration, temperature, nature of reactant and catalyst. Among these four, temperature and catalyst can only change the value of K. Only temperature and catalyst for a particular reaction can change the value of K. Am I clear? Is everything clear? Now, for everyone's waiting topic, अगर आप लोग को लग रहा है कि what actually is this order, तब से हम ये जो order चिल्ला रहे हैं, जो order बोल रहे हैं, what actually is this order? How do you guys understand the term? ठीक है, order के बारे में let's pay attention here. So for example, let us consider the reaction. Okay, यहाँ पे consider एक reaction इन्होंने लिया है, that is M1 moles of A reacting with M2 moles of B giving me P products. So the reaction is like M1 moles of A plus M2 moles of B forming P. This is the reaction. ठीक है. So now according to rate law, let us write to the power of rate. ठीक है, अगर हम लोग rate law represent करते हैं. And what is rate law guys? Again एक बार recap कर लेते हैं. Just a quick recap on what is rate law. Rate law is nothing but rate of a particular equation represented. Again, rate of a particular equation represented in terms of concentration of what? Concentration of reactants. Clear? Concentration of reactants. Similarly, same वही कर रहे हैं. This is the chemical equation we have got. And according to this equation, this is according to the rate law. ठीक है? R is directly proportional to A power P, P power Q. And what are these PQ? These might be, guys might be wondering. ठीक है? PQ क्या होता है? So the thing is, यहाँ पे P and Q, ठीक है, they may be equal to M1 or they may not be equal to M2. Clear? So basically this P and Q, if you add the P plus Q, that is the overall order of the reaction. Clear? And overall order of the reaction. So again R is directly proportional to A power P, B power Q. Correct? जहां पे ये P जो है इक्वल टू और नॉट इक्वल टू M1 हो सकता है, Q इक्वल टू और नॉट इक्वल टू M2 हो सकता है. बोथ कैन हैपन. एंड व्हाट इज P? P इज ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू A, Q इज ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू B. ठीक है, दिस इज द जनरल फॉर, अगर इफ वी टॉक अबाउट फॉर्मूला, सी फॉर एनी टर्म्स लाइक ओके द बेसिक टर्म्स, अगर मुझे रेट लॉ लिखना है किसी भी इक्वेशन का, अगर मुझे रेट लॉ लिखना है, जस्ट सी दिस एग्जांपल. ठीक है, अगर फर्स्ट पे पहला दिस आर सम ऑफ द एग्जांपल्स हाउ कैन यू राइट ऑर्डर, मतलब एक रिएक्शन के लिए ऑर्डर कैसे लिखा जाता है, दैट इज व्हाट दिस इज. क्लियर? सो जस्ट पे अटेंशन हियर. ठीक है, फर्स्ट वाला रिएक्शन देखो, 2 moles of N2O5 giving me 4 moles of NO2 plus O2. अगेन रेट लॉ लिखो सभी. देखो किसी भी इक्वेशन के लिए आपको रेट लॉ लिखना आना चाहिए. किसी भी इक्वेशन, नो डाउट, नो मैटर वॉट एवर, आपको रिएक्शन का रेट लॉ लिखना आना चाहिए. ठीक है, तो रेट लॉ R इज इक्वल टू K एंड व्हाट इज द रिएक्टेंट हियर? इट इज N2O5. N2O5 के पावर में ऑर्डर 1. सो गाइस आप लोग को आपको लग रहा होगा यहाँ पे फर्स्ट है, तो why it is 1 and how is it first order reaction? Okay, that we'll discuss now. ठीक है, अब just basically आपको अगर ये 1 को भी हटा दो तो basically you should know how you're supposed to write a rate law for any given equation. Clear?
these are the examples. So I'll just show you this one particular comparison table where I'm supposed to, okay, just give me a second. Okay, we discussed a few things here. I'll just show you them. Yes. So guys, again I hope your notes are ready. So we discussed, right, this is the general order of the reaction, that this is a chemical reaction हमने लिया है. तो किसी भी इक्वेशन के लिए अगर मैं रेट लॉ या फिर रेट इक्वेशन लिखना चाहता हूँ, so that is what this is called. Okay, now there is a concept called molecularity. Okay, एक छोटी सी concept है molecularity करके. तो we'll discuss molecularity and order. We'll compare these two basically. ठीक है, हम basically compare करते हैं so that आपको समझ में आ जाएगा. You guys can get a clear picture what actually are they and what actually it is. Okay, so molecularity and order of the reaction. So सबसे पहले order is defined as sum of power of concentration terms that appear in rate law. Clear? Sum of, again, just quickly do this. It is the sum of power of concentration terms that appear in rate law. Clear? For example, इसी में देखो आप, ठीक है, this is an equation, right? It is an equation, ammonium nitrate NH4NO2 is giving me N2 plus 2 moles of water, correct? तो अगर इस इक्वेशन के लिए मेरे को रेट लॉ लिखूं तो इट विल बी k टू द पावर, मतलब देखो रेट लॉ के बेसिस पे आपको ऑर्डर डिक्लेयर कर सकते हो. क्लियर? सो यूजुअली फॉर 90% ऑफ द केसेस, फॉर एग्जांपल इफ आई एम राइटिंग 2 moles of, let us write okay, C plus O2 giving me CO2, simple equation. if I am supposed to write rate law, अगर मैं इस इक्वेशन के लिए मैं रेट लॉ लिखना चाहता हूं तो रेट लॉ इज इक्वल टू k इंटू C O2. यहाँ पे 1 है तो जस्ट लाइक C पावर 1 O2 पावर 1. So what is the order of this reaction guys? 1 plus 1 becomes 2. This is the order of the reaction 2. ठीक है, तो बेसिकली ये जो 1 है आप बेसिकली यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, आई मीन जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो टर्म लिखते हो. यूजुअली 90% ऑफ द केसेस दिस इज हाउ यू कैन जस्ट डिफाइन एन ऑर्डर, बट वी हैव एक्सेप्शनल केसेस. सी एक्चुअली अगर आप ऑर्डर को डिफाइन करना चाहते हो ना, अगर आप इफ यू वांट टू डिफाइन ऑर्डर, व्हाट एक्चुअली मींस ऑर्डर, तो लेट अस डिफाइन इट. ठीक है, ऑर्डर इट इज एक्चुअली डिफाइंड as sum of powers of concentration terms, sum of powers of reactant concentration, let it be reactant concentration term. Reactant concentration terms, sum of powers of reactant concentration terms, then that's enough. Okay, so in rate law, so in a given rate law the sum of powers of concentration terms is called order. Okay, this is the general definition, you can clearly understand. But when you come to a molecularity, जब आप molecularity के बारे में सुनोगे, ठीक है, what actually is molecularity, you'll get to understand a bit. Okay, the molecularity is defined as the number of molecules reactant taking part in a chemical reaction. मतलब एक केमिकल रिएक्शन में कितने सारे मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं. ठीक है, एक केमिकल रिएक्शन में कितने सारे मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं एक्चुअली में, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर बीइंग पार्टिसिपेटेड इन ए केमिकल रिएक्शन, दैट इज व्हाट कॉल्ड मॉलिक्युलैरिटी. बट व्हेन यू डिफर, अगर आप ऑर्डर की बात देखोगे तो ऑर्डर इट मींस इट इज द सम ऑफ पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म सिंपली. ठीक है, ये मॉलिक्युलैरिटी कैन बी 1. ओके, मॉलिक्युलैरिटी हमेशा होल नंबर होनी चाहिए, इट कैन नॉट बी 0.
ठीक है. ऑर्डर कैन बी डिफरेंट. ऑर्डर कैन बी जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस एग्जिस्ट. ओके, तो जीरो ऑर्डर इज पॉसिबल. सो दैट मीन्स व्हाट, ऑर्डर का वैल्यू जीरो हो सकता है. ठीक है, अगर ऑर्डर की वैल्यू जीरो हो सकती है, लेकिन मॉलिक्युलरिटी की वैल्यू जीरो कभी भी नहीं हो सकती. ठीक है, इट इज सिंपली आई मीन लाइक इट इज द बेसिक सेंस. अगर आप थोड़ा सा भी लॉजिक लगाओ, जस्ट यू इफ यू कैन अपियर सिंपल लॉजिक, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि मॉलिक्युलरिटी कैन नेवर बी जीरो. एक्चुअली आप खुद डेफिनेशन देखो, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट. एक रिएक्टेंट का कितने मॉलिक्यूल्स केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक, दो. ठीक है, अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा है, लेट अस कंसीडर केमिकल रिएक्शन इज हैपनिंग, दैट मींस रिएक्टेंट तो होगा ही. ठीक है, लेकिन अगर आप कहते हैं मॉलिक्युलरिटी जीरो है, दैट मींस नंबर ऑफ टेकिंग पार्ट केमिकल मॉलिक्यूल्स भी जीरो, मतलब रिएक्शन हो ही नहीं रहा. You get the point, right? So molecularity can never be zero, but order can be zero, fractional, integer, कुछ भी हो सकता है. ठीक है, लेकिन molecularity कभी भी जीरो या फिर फ्रैक्शनल. आप खुद बताओ. ठीक है भाई, मेरे पास CO2 है, वो एक रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है. पहले मैं आधा CO2 भेज दूंगा, 1/2 CO2 जाएगा, फिर हाफ CO2 नहीं जा रहा है. तो दिस कांट बी. ठीक है, इट कांट बी, इट शुड बी ए होल नंबर ऑब्वियसली. And molecularity is usually derived from RDS in the mechanism of reaction. What is an RDS, guys? RDS मतलब rate determining step. Clear? Rate determining step. RDS means rate determining step. And what is the rate determining step? Does anyone know? See, rate determining step आप लोग clearly बता सकते हो. What is the rate determining step? Rate determining step is basically, for example, I'm having substance A and it has to be converted to E. This is the first pathway. ठीक है, second pathway it goes to B, it goes to C, it goes to D, and then it goes to E. This is the second pathway. Correct? So ये first step है इसका second, third, fourth. Clear? So usually the first step, it is the first step. मतलब A to E जा रहा है. ठीक है, लेकिन ये mechanism है. A to E, this process is the mechanism pathway. ठीक है, मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर आपको दाल खानी है, लेट अस टेक ए सिंपल एग्जाम्पल गाइस. इफ यू वांट टू ईट समथिंग एट योर मतलब आपको कुछ खाना है. ठीक है, पिज्जा खाना है, कुछ तो खाना है, तो आप क्या करोगे, सीधा पिज्जा तो नहीं खा सकते, पहले उसको बनाओगे, राइट? तो उसकी बनाओगे, पिज्जा का आटा लगाओगे, जस्ट मेक द पिज्जा डो, then you put the toppings, then you ask to bake it. So that is what the called the entire mechanism. And for example, this is you and this is your food. Let us consider it as pizza. You want to eat this, but you have to make first. ठीक है, आपको पूरा बनाना है. So in this, so what is the basic step? First step, you'll just knead the dough. ठीक है, you have to knead the dough. It will be taking some time. So that is your rate determining step. See how fast if you're gonna knead the dough, उतना जल्दी आपका पिज्जा बनेगा, उतना जल्दी आप खाना खाओगे, राइट? सो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, उससे मॉलिक्युलरिटी पता करती है. लेकिन ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इट इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड, इट इज ऑलवेज इजीली टेकन फ्रॉम व्हाट, द मॉलिक्युलरिटी. आई मीन द रेट लॉ, सॉरी नॉट मॉलिक्युलरिटी, इट्स द रेट लॉ. ठीक है, रेट लॉ के एक्सप्रेशन से आप ऑर्डर इजीली निकाल सकते हो. एंड तीसरी बात ये, ऑर्डर इज एन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू एंड मॉलिक्युलरिटी इज अ थियोरेटिकल वैल्यू. ठीक है, these are the four major differences you must be keeping in mind. Even if someone is preparing for your boards, you're preparing for your state boards or your normal board examinations, अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन तो आएगा ही. ठीक है, CBSE किसी में भी जाओ, this question is a basic question and they'll be asking this for 4 marks as a short question or something. ठीक है, and NEET के लिए तो ये how important you know more than me. ठीक है, मुझसे ज़्यादा तो you guys know what chapter it is and how important it has. Clear? So that is what. Now again, basically in this chapter we'll be discussing order of the reaction. For zero order, we'll discuss zero order, first order, second order and nth order. ठीक है, zero, first, second, nth. These are the 4 topics we'll be discussing. But let me be clear to everyone that zero and first order is given in NCERT. ठीक है, अगर अकॉर्डिंग टू NCERT अगर जाएंगे तो जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर क्वेश्चंस, मतलब जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर कैन ओनली बी सीन इन योर टेक्स्ट बुक्स. सेकेंड ऑर्डर, nth ऑर्डर, वी विल बी डिराइविंग देम. क्लियर? कुछ लोगों को लग रहा होगा कि भाई NCERT में जो है वही करना है. ऑब्वियसली वो करना ही है, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट्स में यू हैव टू गो एक्स्ट्रा.
Clear? You have to go extra and you have to be like सेकेंड एंड nth ऑर्डर, मतलब थोड़ा ऊपर जाओगे. कभी कभार क्वेश्चंस बाहर से भी आ सकते हैं, लाइक थोड़ा सा ट्विस्ट कर देंगे, तो यू कैन नॉट टेक द चांस, राइट? भाई चांस क्यों ले, हम बताओ. You should never take chance. You should be like prepared. Be prepared. There is a thing. There is a motto. I hope everyone is well heard of Scouts and Guides. Correct? Scouts and Guides जैसे NCC है, जैसे NSS है, ऐसा ही Scouts and Guides भी है. उनका एक मोटो होता है. Their motto is be prepared. ठीक है. सिमिलरली उनके तरह ही आपको भी बी प्रिपेयर्ड रहना चाहिए. कुछ भी आए, ठीक है, यू मस्ट बी डूइंग योर आंसर्स. सो इन द कमिंग सेशंस we'll be discussing zero order, first order, the basic what is the zero order reaction, ठीक है, ग्राफ कैसे होती है उसकी, उसके इक्वेशंस कैसे निकालेंगे हम लोग, के रेट कांस्टेंट कैसे बनाते हैं. we'll be discussing all these in the coming sessions guys. ठीक है. in the upcoming live session, the next session जो होगा, it will be on the next Thursday. We'll be taking the next live session. So on that day we'll be discussing the order basically in more details, and we'll be deriving the graphs. So I want all of you to pay attention. Just have a quick NCERT readout at your home, please. ठीक है. Whoever preparing for the NEET upcoming 2024, if anyone is preparing for the NEET 2024 guys, all the aspirants of NEET 2024, clear? Start preparing now. Start preparation. अभी start कर दो. You won't have time. ठीक है. जितना जल्दी start करोगे उतना अच्छा है. And the guys who are having the exam in the coming May 7th, NEET 2023 जो लोग दे रहे हैं, उनके लिए from my side and APJ, we are wishing you sincerely all the very best. Just be focused. Go give your exam. You hardly left with one more week. So the thing I want to give my student and all of you who are watching this right now and who will be watching this video in the coming time, आप लोग को ये बता दूं मैं कि बचे हुए एक हफ्ते में utilize it to the maximum. Keep on revising the concepts. Do more revisions guys. ठीक है. The more you revise, the more you're gonna be crystal clear. Make sure your concepts are on tips. Do as many as test series and as many as PYQs. Clear? PYQs will be the only thing that will save you in the end. Clear? ठीक है. And दूसरी बात आपके पास जो है अभी, it is like you must be having the error notes. Okay, every student must be having this error notes, and if someone is not having, please maintain this error notes. What is this error notes? मतलब, see, if you are giving a test paper, let us say you are given a test paper of 10 questions, ठीक है, and out of these 10 questions 5 questions are wrong. So उस notebook में 5 questions को लिखो. And second, if you are doing again 100 next एक test दे रहे हो, 100 questions का दे रहे हो, 100 questions में आपने 70 questions you did correct and 30 questions are wrong. Put this 30 questions in this error notes, and before going to the NEET exam, just revise those incorrect questions जहाँ पे आपने गलती करी थी, and वो concepts को अच्छे से revise कर लो. So this is how something helps. And ये था आपका आज का NEET का tip, NEET preparation tip मेरे तरफ से. And in the upcoming live sessions also, I'll be giving one tip every session that will be helpful for you. Okay. And let us conclude what we finished on this session. Just a quick recap. Clear? We understood what is order. We understood what is molecularity. हमने देखा order molecularity के अलावा हमने डिस्कस किया rate law. We discussed rate law. ठीक है. तीनों interrelated concepts है. Everyone try to practice rate law. What is or study about order and molecularity. Just the the introduction I have given today. What is order? What is molecularity? We'll go more deeply to the order in the coming sections. And what is rate law as discussed? Rate law, again, differentiation. Rate of an equation is represented in terms of concentration of this reactants to the power order. This is your rate law, guys. Okay? These are the three things we discussed today in the session. In the upcoming session, we'll be discussing order pe more concepts on it. I hope everything is clear, and that's all for today, guys. And all your doubts, all your queries, if you have anything to ask, you can access our Telegram channel. Link in the description. आप डिस्क्रिप्शन पे जाके देखोगे तो आपको टेलीग्राम की चैनल मिल जाएगी. हमारी इंस्टाग्राम पे भी हमने
you have know from each chapter how many questions going to come. There's a clear picture on our Instagram as well, so do check out that, and also like, share and subscribe this, and also please make sure that whatever being taught in the live sessions, you note this down and use it in your upcoming sessions. That's all for today. This is Dr. Dharan. Let's meet in the upcoming sessions, guys. Thank you.